Hello, children. Today we will do a new lesson. The swimmer who does not need her legs. आज आम गोटे नुआ पाठ्य करवा जो थे जड़े पहराड़ी को तार गोड़ दरकार न कि भी से पहरी पारिला. We meet several people on our way to school or on our return. Vendors, hawkers and handicapped people. Do we anytime think about them? आमे स्कूल को जिबा बेले किंबा फेरिला बेले अनेक लोकों को देखू. फेरीवाला, बिक्री करला वाला, विकलांग बा शारीरिक किंबा मानसिक भाव में असमर्थ थिबा व्यक्ति को आमे केतेबेले हेले सेमानक कथा भाबू. Think about a child who is struck by polio. गोटे पिला संबंध रे भाव जहा को पोलियो होइछि. पोलियो गोटे संक्रामक भाइरस जहा आक्रमण कले मांसपेशी अकर्मण्य हो जाती फल सी गोड़ को घोसारी चले. कैन ही स्विम अक्रॉस अ पॉन्ड और रिवर? से पिलाटी को नदी रे बा पोखरी रे पहरी पारिबो? विल इट बी इजी और डिफिकल्ट फॉर हिम? से पिलाटी एहा सहजरे करि पारिबो ना बहु कष्ट हेबो ताकू? विल इट बी इम्पॉसिबल फॉर हिम? ता पई कोन एहा असंभव होई जिवो? Read the lesson and see how a young girl of 19 who was struck by polio was able to swim the English Channel. Her crippled legs did not stand on her way to become a talented sea swimmer. पाठ्यटी पढ़ी करी देखिबा किपरि गोटिए 19 वर्षर युवती जाहाकू पोलियो होइथिला इंग्लिश चैनल रे पहरी पारिला. तार छोटा गोड़ थिबा सत्वे सी गोटे प्रतिभाशाली समुद्र पहराड़ी किपरि होई पारला चलो देखिबा. टेक्स्ट आरंभ. इंग्लिश चैनल होची जे जलपथ इंग्लैंड एवं फ्रांस रो समुद्र को अलगा करे. Imagine swimming across a pool with your feet dragging you down. कल्पना करो तमे गोटे पोखरी रे पहरुछ एवं तमरो दुईटी जाक गोड़ तुमको तळकु घोसारुछ. Now imagine having the courage to swim across the English Channel in a similar fashion. बर्तमान कल्पना करो सही भाबरे तमे इंग्लिश चैनल रे पहरुछ. Isn't it unimaginable? अविश्वास्य नुहे, विश्वास करी होची. In spite of having legs made useless by polio, C.N. Janaki has become the first handicapped person to be a part of a successful team crossing the channel. जो पहराड़ी माने इंग्लिश जलपथ को अतिक्रम करिबारे सफल होइथिले सेमानक मध्यरु सीएन जानकी जणे पहराड़ी थिले. पोलियो द्वारा दुईटी जाक गोड़ अकर्मण्य हेबा सत्वे से प्रथम विकलांग बा छोटा व्यक्ति थिले जे एहा करि पारिले. It was 1987 that Janaki was struck by polio. 1987 मसिया रे जानकी को एही संक्रामक भाइरस टी आक्रमण करथिला. As a child, she got the idea of trying to swim the English Channel. पिला थिबा दिनटे इंग्लिश पथरे इंग्लिश जलपथरे पहरिया पाई तांको मनरे एही कल्पनाटा जागिथिला. So she conveyed this to the English Channel Swimming Association for details and they replied that two conditions have to be met before a swimmer is allowed to make an attempt. तेणु सी एहा इंग्राजी जलपथ पहरिबा संघ को अवगत कराई तथ्य समूह मागिले जार उत्तर रे सेमाने कहिले दुईटी शर्त पूर्ण करि पारले जणे पहराळी को सेठारे उद्यम करिवा पई अनुमति दिया जिवो. The first condition, प्रथम शर्तटी, the swimmer should be able to spend at least 10 hours continuously in water. पहराळी जेपरी जल भितरे अविच्छिन्न भावरे 10 घंटा बिताई पारिबो. सेकंड कंडीशन, द्वितीयटी, the swimmer should be able to do marathon swimming, that is he or she should be able to swim in the high seas for long hours at a stretch. पहराळी जेपरी सागर रे बहु घंटा पर्यंत अविच्छिन्न भावरे पहरी पारिबो. Janaki began training very hard in Bangalore to fulfill these conditions. एही शर्त गुडी को पूर्ण करबा पई जानकी बेंगलोर रे तार प्रशिक्षण सुचारू भावरे आरंभ कर देले. After almost 4 years of training, she said,
I was able to spend 10 hours at a stretch in the swimming pool. प्राय 4 वर्ष प्रशिक्षण परे जानकी कहिले अविच्छिन्न भावरे 10 घंटा पोखरी रे मु रही पारिली. An NIS coach, Mr. Gopal, gave me a certificate saying that he had seen me swim for 10 hours continuously. श्रीमान गोपाल नामक जने NIS प्रशिक्षण मते गोटिए प्रमाण पत्र देले जेउथिरे लिखा थिला जे सीए मते 10 घंटा अविच्छिन्न भावरे पहरिबा देखिछंती. Then, with the help of the Thimaya National Academy of Adventure, she went to the coastal town of Malapi and began training in the Arabian Sea. तापरे उद्दीपक अनुभूतिर थिमाया राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठानर साहाय्यरे जानकी मालपी नामक एक उपकूलवर्ती सहर को जाई आरब सागर रे तांकर प्रशिक्षण आरंभ कले. She spent 3 weeks there with a coach called Dinesh Suvarna. सेठारे सीए दिनेश सुवर्ण नामक जने प्रशिक्षकंक पाखरे 3 सप्ताह बिताइले. She learned to spend long hours in the sea by swimming a minimum of 20 kilometers a day. सर्वनिम्न दिनकु 20 किलोमीटर समुद्र रे पहरिबा एवं बहु घंटा जल रे बिताइबा से सिखि गले. Janaki then returned to Bangalore and sent her certificates to the Channel Swimming Association in England. Janaki Bangalore को फेरिला परे तांकर सबुतक प्रमाण पत्र इंग्लैंड रो जलपथ पहरिबा संघ को पठाई देले. When they gave her permission to make the attempt, she had to start collecting funds for the trip. जेतेबेले सेमाने जानकी को उद्यम करिवा पई अनुमति देई देले यात्रा रे जिबा पई अर्थ संग्रह करिबा जानकी आरंभ करिले. The government, a few private agencies and several friends contributed the money she needed for the attempt. एही उद्यमटी करिबा पई जतिकी अर्थ प्रयोजन थिला ताहा सरकार किछि व्यक्तिगत कार्यालय एवं अनेक बंधु जानकी को देई साहाय्य कले. Janaki and her parents left for England in the middle of 1992. 1992 ର मध्य भागरे जानकी एवं तांकर पितामाता इंग्लैंड को गले. When she reached Dover and began practicing in the English Channel, the Channel Swimming Association officials were quite shocked. Dover रे पहुंची जानकी जेतेबेले इंग्लिश जलपथ रे अभ्यास आरंभ कले जलपथ पहरिबा सफल लोक माने तांकु देखि अत्यंत भावरे स्तंभीभूत होई गले. This was the first time in their experience that a physically handicapped person was trying to swim the English Channel. प्रथम थर सेमाने अनुभूति कले गोटे शारीरिक असमर्थ व्यक्ति को इंग्लिश जलपथ रे पहरिबा देखि. किछि शब्दर न्यू वर्ड्स माने बुझिबा. इंग्लिश चैनल जो जलपथ इंग्लैंड एवं फ्रांस को अलगा करे. The narrow sea passage that separates England and France. Polio, संक्रामक virus, infectious disease of the spine which causes an inability to move certain muscles. Handicapped, here शारीरिक असामर्थ्य, having the physical disability of not being able to walk. At a stretch, अविच्छिन्न भावरे, without stopping. NIS, National Institute of Sports, राष्ट्रीय खेल संस्था. Now we will do the question answers. प्रश्न उत्तर करिबा. When did Janaki get the idea of swimming the English Channel? English जलपथ रे पहरिबा पई केउ समय रे जानकी को मन रे एही भावनाटी आसिला? As a child, Janaki got the idea of swimming the English Channel. पिला थिला बेले दिने जेतेबेले जानकींकर मन रे इंग्लिश जलपथ रे पहरिबा भावनाटी आसीथिला. What did she plan to do then? तापरे कोन करिया पई से योजना कले? She then planned to convey this idea to the English Channel Swimming Association for details. से तापरे योजना कले इंग्लिश जलपथ पहरिबा संस्था को एही विषय रे लिखि तथ्य समूह मगाइबा पई. Who said I was able to swim 10 hours at a stretch in the swimming pool?
किए कहला मु 10 घंटा अविच्छिन्न भावरे पोखरी रे पहरी पारिबी? चूज द करेक्ट आंसर. मिस्टर गोपाल, मिस्टर दिनेश सुवर्ण और जानकी? आंसर होची जानकी. Where did she go with the help of Thimaya Academy of Adventure? Thimaya राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान साहाय्य जानकी केउठाकू गले? With the help of the Thimaya National Academy of Adventure, Janaki went to the coastal town of Malapi and began training in the Arabian Sea. Thimaya राष्ट्रीय शिक्षा अनुष्ठान साहाय्य जानकी मालपी नामक एक उपकूलवर्ती सहर को जाई अरब सागर रे तांकर प्रशिक्षण आरंभ कले. What did she do there? से सेठारे कोन कले? She spent 3 weeks there with a coach called Dinesh Suvarna. She learned to spend long hours in the sea by swimming a minimum of 20 kilometers a day. सेठारे सिए दिनेश सुवर्ण नामक जने प्रशिक्षकଙ୍କ पाखरे 3 सप्ताह बिताइले. बहु समय जल रे रहिबा एवं सर्वनिम्न दिन को 20 किलोमीटर समुद्र रे पहरिबा सिखि गले. Who contributed the money she needed for swimming the English Channel? किए तांकु अर्थ देई साहाय्य कले? The government, a few private agencies and several friends contributed the money she needed for the attempt. सरकार किछि व्यक्तिगत कार्यालय एवं अनेक बंधु जानकीଙ୍କୁ अर्थ देई साहाय्य कले सही इंग्लिश चैनल जलपथरे पहरिया पई. What were the conditions set by the English Channel Swimming Authority? क्यों शर्त इंग्लिश जलपथ पहरिबा संस्था रखिथिले? 2 conditions were set by the English Channel Swimming Authority. The first, the swimmer should be able to spend at least 10 hours continuously in water. प्रथम शर्तटी पहराळी जेपरी जल भितरे अविच्छिन्न भावरे 10 घंटा बिताई पारिबो. Second condition, the swimmer should be able to do marathon swimming, that is, he or she should be able to swim in the high seas for long hours at a stretch. पहराळी जेपरी सागर रे बहु घंटा पर्यंत अविच्छिन्न भावरे पहरी पारिबो. Why were the officials of English Channel Swimming Association shocked? The officials of English Channel Swimming Associations were shocked to see Janaki swimming. It was their first experience to see a physically handicapped person swimming in the English Channel. प्रथम थर से माने अनुभूति कले गोटे शारीरिक असमर्थ व्यक्ति को इंग्लिश जलपथरे पहरिबा देखि. एठी हमर प्रथम भागटी सैला पुणी द्वितीय भागटे परे करबा. ओके, थैंक यू.